जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। सो आपण चैनल उत्कर्ष मैथ रे आपण मानक स्वागत। सो एटी आम सीएसआर नेट गेट रो पीआईक्यू सेशन डिस्कशन करवा एंड जो मैंने सीएस हायर एजुकेशन देखुं सो ट्राई टू कांटेक्ट अफ दिस नंबर कारण एटी मु आपण मन को ऐड करदेवी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड मेनी मोर अपडेट एंड हियर। सो लेट्स स्टार्ट अफ द टू डेज सेशन। This question is basically get 2025 and ये real analysis question माने several variable question बचा and question number 53 and consider the function f such that r square to r square is given by f of x y is defined like that and पचा which of the following is are true आगा भितर को statement true so मते सेटा खोजिबार अछि so मते एटी केमिति करबी question टी माने how to start सो फास्ट मुझे ऑप्शन डी को पढ़ी सो ऑप्शन डी ट्रू कि फॉल्स सो मतलब चेक कर अच्छी ना तो कोई एफ सब्जेक्टिव हम कि तुम मैंने डिफाइन कौन पढ़ी तो डेफिनेशन सब्जेक्टिव जब तुम मैंने डोमेन सेट देछि आर स्क्वायर सो एफ ऑफ आर स्क्वायर कले आ को डोमेन देछि कोन आर स्क्वायर तुम कोन पाइबो आर स्क्वायर पाइबो देन तुम मैंने कहबो इम्प्लाइज करिवो एफ इज सब्जेक्टिव yes or no this is the definition I use here so मुगा यदि f of r square equal to r square that means every point पई किछि ना किछि at least one element है सीधा कोन इमेज को प्री इमेज दिबो yes or no मुगा करबी f of x, y इक्वल टू आर द पॉइंट 0 0 रे पुट करिवो ओके मोड एमि जोडा कोन इमेज सॉरी प्री इमेज एलिमेंट खोजिबी जो पॉइंट थ्रू रे कोन जो इमेज एलिमेंट 0 0 दोतबो सो चलो आमे एबे फॉर्म पढिछु e टू द पावर 2 pi x cos cos 2 pi y and e to the power 2 pi x sin 2 pi y ओके किसी तो ये नहीं इक्वल टू कौन है 0,0 ओके तो प्रत्येक पॉइंट पे हमें चेक करते हैं e टू द 2f तो ये एक cos 2 pi y इक्वल टू 0 दरकार एंड sin 2 pi y इक्वल टू 0 दरकार दैट मीन्स जो y रो वैल्यू cos 0 कोटी 2 pi y cos इनवर्स 2 n pi y okay and n belongs to d n belongs to z okay so sin 2 pi sorry 2 seconds I really sorry आपण माने जानि थिबे pi by 2 रे 0 ना सो त माने 2 n plus 1 by 2 pi okay so आफ्टर कोन y रो वैल्यू कोन आसी जीवो 2 n plus 1 by 4 okay this is y and n belongs to z similarly sin 2 pi कोन हो 2 pi y equal to 0 हो 2 n pi 2 n pi okay pi pi cancel y equal to कोन आसी जीवो n m लिख दोछि कारण m बेटर ओके m belongs to कोडी z तो दैट मीन्स एटी आमे देखिलु जो y रो जो वैल्यू अछि से रियली चेंज होछि कारण मु जदी y रो वैल्यू n वैल्यू 1 नेली दैट मीन्स ये कोन हो 2 1 1 3/4 ओके 3/4 बट एटी तो मुझे 1 नेली सेटी 3/4 कोई एमती y एलियो नहीं कारण y इक्वल टू 3/4 रे कोन होछि 0 दोछि दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट बट फर्स्ट माने फर्स्ट टर्म बट सेकंड टर्म 0 दो ना तो दैट मीन्स देयर इज नो एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ x, y there does not exist x, y such that कोन f of x, y कोन हो 0 हो so that means तमें कोन से एलिमेंट पाइबो ना प्री इमेज ऑफ कोन 0,0 so that means f is not कोन सब्जेक्टिव ए बोडा कोन नॉट सब्जेक्टिव ओके तो मैंने बुझी पाइलो f कोन पे सब्जेक्टिव नो ऑप्शन डी भूल सो ऑप्शन बी कोन ट्रू हो कि तुम ए डायरेक्ट कर यदि r स्क्वायर क्लोज सेट ना ए सुनो r स्क्वायर क्लोज्ड सेट बट f of r स्क्वायर कोन आसिला r स्क्वायर प्लस 0,0 so which is not close so that means ये कौन ओपन सेट so ये कौन है फॉल्स है so ऑप्शन बी भी भूल कर दो दैट्स यू कैन यूज सब्जेक्टिव नियम एंड ए और सी ट्रू हो कि सो चला हम देखिए देखो ए ऑप्शन देथिला जे मते भी कौन करे ए ऑप्शन देथिला जे g इज ओपन एंड f of g इक्वल r स्क्वायर तो देखो f of x, y जो देछि सी कौन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल yes और नो कारण e टू द पावर 2 pi x कोड के किछि नै cos 2 pi y e टू द पावर 2 pi x sin 2 pi y ओके सो द f इज continuous plus differentiable okay and domain and यदि मु देखिबी जैकोबी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट सो डायरेक्टली कहि देबी कोन सी ओपन सबसेट कोन एपो ता जो इमेज सेट है सी भी ओपन सेट हो चलो देखिया जैकोबी यदि इक्वल टू 0 हो नॉट इक्वल टू 0 चलो हम चेक करिया यदि होल पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 देन हम डायरेक्टली कहि दो सो लेट्स चेक इट टू ई आकु कोन करिया दिस वन इज f सॉरी this one I will take f of 1 this one is take f of 2 f of 1 x f of 2 x f of 1 y f of 2 y okay so with respect to x f of 1 x with respect to x e to the power 2 pi e to the power 2 pi x cos 2 pi y okay so ये कौन है जीवो f of 2 with respect to x सेम 2 pi e to the power sorry e to the power 2 pi x e to the 2 pi x sin 2 pi y सेकंड ये कौन बता देखिए आपको with respect to y e to the power 2 pi x 2 pi and e to the power 2 pi x cos डेरिवेटिव जी कौन हो ये माइनस sin 2 pi y and ये कौन हो 2 pi y दैट मीन्स 2 pi e to the power 2 pi x ये cos 2 pi y ओके तो डिटरमिनेंट कौन आसो 2 pi 4 pi स्क्वायर कॉमन नहीं जी ये cos स्क्वायर 2 pi y प्लस sin स्क्वायर 2 pi y
and e to the power 4 pi x. Okay, so after going 4 pi square e to the power 4 pi x not equal to 0 for every x comma y belongs to r square. Okay, कौन सी r square पर not equal to 0, that means तो मैंने directly कही दबो कौन सी open set, suppose g is open set अच्छी, यदि g is open implies करीब f of g भी कौन हवा open, yes or no. So option a कौन है जीवो true statement है. ऑप्शन सी कौन हम, सो ऑप्शन सी कहला जी जदि डेंस इन आर स्क्वायर हम, एफ ऑफ जी इज डेंस इन आर स्क्वायर आ तो मैंने ए गुडा कंटीन्यूअस. ओके, तो एफ इज कंटीन्यूअस. सो दिस यू नो, तो हाउ टू प्रूफ एंड यू नो इट. ओके, एफ कंटीन्यूअस इज ऑन आर स्क्वायर. सो मते कौन करियर अछि एफ ऑप्शन सी रही लिखुछि एफ कंटीन्यूअस होई अछि. सेकंड मते कौन करियर अछि ताको देखियार अछि, सपोज जी जदि डेंस इन आर स्क्वायर दैट मींस जी जदि डेंस, ओके डेंस इन आर स्क्वायर जदि सी हुए, सो दैट मींस जो आर स्क्वायर इज ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ जी, yes or no. So that's implies g closure equal to r square. ओके, सो जी क्लोज हो आर सर मत ए ये को आम जब एफ इज कंटिन्यूअस ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थाए एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ एफ ऑफ जी होल क्लोजर. यस, आ मत यहाँ शो करार अच्छे एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस वन इज टू शो. ओके, मत यहाँ शो करार अच्छे. सो आई यूज हियर. सो एफ ऑफ जी क्लोजर. ओके, सो एफ ऑफ जी आम जानू एफ ऑफ जी कौन एफ ऑफ आर स्क्वायर एंड ये सबसेट ऑफ कौन एफ ऑफ जी रो क्लोजर. सो दैट मीन्स एफ ऑफ जी जो क्लोजर कौन हम आर स्क्वायर एटलिस्ट 0,0 हटि जाव. सो एफ ऑफ जी रो होल क्लोजर. ओके ओके, सो मत यहाँ शो कर बट मुझे कही तुम पढ़ी क्लोजर ऑफ एनी सबसेट इज क्लोज्ड सेट. तो जार क्लोज सेट भाग कर जहाँ जो सबसेट क्लोज सेट कर बट जो क्लोजर सेट हो सी गोटे कौन कौन क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ऑफ सेट. ओके, सो दैट मीन्स मुझे कहूँ चाहिए जे मतलब ए एनी सेट तार क्लोजर ऑलवेज गोटे की सेट हो क्लोज सेट. ओके, सो दैट मीन्स एफ ऑफ जी गोटे की सेट एफ ऑफ जीरो होल क्लोजर कौन हम क्लोज सेट आ सी केबे भी आर स्क्वायर स्लैश 0,0 हम, तो दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो क्लोजर कौन हम आर स्क्वायर है जीवो. सो जदि जी इज कंटिन्यू जी इज एफ इज कंटिन्यूअस जी जदि डेंस इन आर स्क्वायर हुए देन एफ ऑफ जी भी इज ए डेंस इन कौन आर स्क्वायर. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 रो आंसर ए एंड सी. क्वेश्चन गेट 2025 एंड ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस टॉपिक पचाई एंड सेवरल वेरिएबल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 26 जब तुम मैंने पचार व्हाट इज द रेटिंग इट्स अ वेरी मॉडरेटेड क्वेश्चन. आपको जब तुम मैंने निजे ट्राई कर सो यू सॉल्व इट इन क्विकली. सो चल आम कारण ये सब किसी गिवन अच्छी तुम मैंने किसी कॉन्सेप्ट जाना ओनली यू नो द लिमिटिंग डेफिनेशन. सो यू नो द आंसर. सो चल आम गोटे गोटे सॉल्व करवा. सो फास्ट ऑप्शन S1 देखिए ट्रू हम कि ना. सो फास्ट आम लिखा एफ ऑफ एक्स कमा वाई. सो एफ ऑफ एक्स कमा वाई कौन होता एस स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो मत कौन कर फास्ट S1 स्टेटमेंट लिमिटिंग एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट वाई टेंड्स टू 0 एक्जिस्ट कर. सो चल हम देखिए एक्जिस्ट करूँ कि करूँ. सो फास्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो फास्ट कौन करें लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 फास्ट लिमिट वाई टेंड्स टू 0 फास्ट अप्लाई कर दैट मीन्स ये कौन है वाई 0 है दैट मीन्स 1. ओके, सो प्लस ये कौन है एक्स लिमिट वाई टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एस स्क्वायर तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट कले ये कौन है 1. सो कौन लिमिटिंग कौन कर एक्जिस्ट कर. सो फास्ट स्टेटमेंट फास्ट ऑप्शन कौन हो ट्रू स्टेटमेंट. ओके, मत ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट कलेक्ट करे तो T1 इज कौन ट्रू. सो S2 कौन हम limit y tends to 0 limit x tends to 0. So this function is s square minus y square divided by s square plus y square plus x sin 1 divided by s square plus minus y square. Okay, x tends to 0 put कर limit y tends to 0 minus 1 plus 0. So after you can sorry minus 1. Okay, so limit कौन exist करछि तो that means second statement कौन है ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हम कि ना फॉल्स हम सेटा भी मते भाबियार अछि. सो एबे मु कोन करिवि 2 सेकेंड ना भी मु छोटो कर दोछि. सो ऑप्शन जो हमु देछि तो 2 सेकेंड. ओके, सो मते कोन करछि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये पार्ट देखिए तुम कौन डज नॉट एक्जिस्ट. ओके, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू कौन हो 0 हो जाए बट
this part कौन कर does not exist. So that means तो मैंने directly कह दबा the third statement कौन अछि false statement कौन माने ये exist करिबनी. Which option? S1 and S2 true and S3 is कौन false statement. So option B is correct answer of this question number 26 get 2025 question. This questions get 2025 and ये question real analysis topic ରୁ ପଚାରିଛି. Question number 25 ତ ପଚାରିଛି consider the following the region S1 and S2 ଦିଟା region ଦେଇଛି ଆଉ ଆଙ୍କର maximum value find କରିବାର ଅଛି. So this questions basically LP per question but ଏଠି maximum minimum ଦେଇଛି, so that's I will add in the real analysis topic, but yeah this question only solved by LPP. So how to solve? First हम S1 and S2 region ର କଣ କରିବା image बनेଇ दबा ଆଉ से image ରୁ ଆମେ S2 and S1 and S2 S1 କ ଭିତରେ relation देखि तांकर कोन maximum value find କରିବାର ଅଛି x1 plus x2. So by graph रे ଆମେ କରିବା फास्ट आम कौन S1 S2 रीजन चला देखा फास्ट ऑप्शन ए को हम डिस्कस करार अच्छी ट्रू हबार अच्छी सो सेटा देखा S2 रीजन कौन गला 2x1 लेस देन 5 2x1 सॉरी 2x1 x2 लेस देन 5 x1 plus 2x2 less than 5. Okay, this one is first. Okay, so that's I make a table. So table ebe kon kariba first this table I will make here x1 0 x2 kon asibo -5 and x2 0 hele x1 kon 5/2. So I add the graph. So x1 0 है ये कौन से 5/1 2 here. Okay, here is 5/2 and sorry okay sorry okay 5/2 words. Okay, 2 seconds. So what I will do first x1 0 कर ले x2 कौन से -5, so this one and ये 5/2 1 2 this one 5/2 here. Okay, so this one is 5/2 and here is 5/2 comma 0. Okay, so then after I will make this one graph. Here is okay, so x1 0 हेले कौन x1 0 हेले x2 कौन आसीबो 5/2 x2 0 हेले x1 कौन आसीबो 5. Okay, so x1 0 5/2 here and 3 4 5 like that graph. Okay, so second कौन आसीबो this okay this two तापरे हम माने कौन करिबा and ये region. Okay, कारण ताको भीतर and ये कौन है 0,0 ये less than that means true. So direction here and the direction कौन here. Okay, so this is the region of S2 and S2 भितर आम कौन करिया पॉइंट बाहर करिया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट कौन कौन अछि 0,0 and that point is 5/0,5/2 and ये कौन अछि सेटा हम बाहर करिया and you solve of these 2 points. So after you can try to and the point is come what so you solve it here. So you multiple 2 in here 4x1 plus minus 2x2 equal to 5 and x1 plus 2x2 equal to 5 this one 10. Okay, so 5x1 2 multiplication that's 10. Okay, first equation so equal to 15 x1 value कौन 3 and x1 value 3 आसिला and x2 value कौन आसी जीवो 5 is 1. Okay, so that's point is कौन 3,1. Okay, so you use what's the value 0 yes 5/2 and 3 plus 1 is 4. So what is the maximum value of S2 region? It's 4, but first option कौन है भूल गयो ଆଉ maximum value of x1 plus x2 equal to कौन 5 on the region of S2 minus S1. तो मान यदि S2 minus S1 यदि maximum value कौन है दरकार यदि for this condition hold करेगा maximum value of S2 इन द रीजन कौन हम मैक्सिमम वैल्यू S2 रीजन कौन हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होबा दरकार ना यस और नो यार तो किछि भी वैल्यू आसो ना किछि भी रीजन में किछि भी वैल्यू आसो 0 आसो 0 टू भी बड़ा किछि तो पॉजिटिव वैल्यू होबा ना. सो दैट्स मींस ये कौन हम ग्रेटर देन 5 बट S2 रो वैल्यू कौन आसी गला 4 इज कौन लेस देन 5. सो यू कैन कौन कॉन्ट्राडिक्ट. सो ऑप्शन बी कौन है फॉल्स स्टेटमेंट है एस और नो तो माने बुझी पाइलो. सो ऑप्शन सी और डी को केमिति करबा S1 इंटरसेक्शन S2 कौन होबो S1 यूनियन ऑफ S2 कौन होबो. सो यदि S1 इंटरसेक्शन S2 ओके सो सेकंड रीजन कौन अछि x1 plus 2x2 here I make the कौन line. So but only one line कौन एटा line टू करियर अछि. So 2x1 plus x2 equal to 4. Okay, मते भी कौन करियर अछि. So here I move 2 second छोटो कर दोछि. ओके सो इट्स बेटर फॉर तो दैट्स मीन एबे मते कोन करे अछि मते तो x1 plus 2x2 and less than equal to 5 थिला s1 रीजन है और 2x1 plus x2 is less than कोन 4. ओके सो एबे मते कोन करिवार अछि आर कोन लाइन एबे एटी कोन प्लॉट करिवार अछि. सो तेला हम प्लॉट करिया सरी लाइन कोन आसीबो ब्लैक कलर 0 x1 0 है x2 कौन 4 and x2 0 है x1 कौन 2. So like that this one is 2 comma 0 sorry this one is 2 comma 0 and this 4 comma 0 here. Okay, and 2 seconds so graph will need something 2 seconds so I will check here. Okay sorry I will check. Okay so देखो it कौन 0 4 that means 2 3 4. Okay so 2 0 like here. Okay so this is the kind of graph.
ओके सो दिस ग्राफ तो एबे मते कोन करियर अछि एंड ये हला 4,0 मु कोन करी S1 रीजन ओके सो S1 इंटरसेक्शन कोन छि S2 आंक भीतर कॉमन कोड होला दिस वन रीजन S1 इंटरसेक्शन S2 ओके आई विल कोन ताकू मु ये कर छी S1 आंक भीतर को पॉइंट कोन अछि ये अठी 2 एबे देखिया S1 बटे फर्स्ट 0,0 0 वैल्यू दोची एंड ये देछि 2,0 2 आसी जीवो आउ एठी कोन आसीबो 2 सेकंड 5 0,5/2 सी आसीबो कोन 5/2 तो आंक भीतर मैक्सिमम वैल्यू खोजर अछि ना सो दिस पॉइंट आई विल चेक so what is the value so आमे कोन करबा ए दिटा इक्वेशन सॉल्व करिया like that this equation okay black and blue okay this equation I solve so एबे सॉल्व करिया so एबे कोन करिया x1 + 2x2 < 5 2x1 okay अंग सॉल्व करा देखिया कोन वैल्यू आछि multiple of 2 2x1 plus 4x2 equal to 10 and of 2x1 plus x2 equal to 4 so minus 3x2 is 6 x2 equal to 2 okay jadi x2 value 2 x1 ର value कोन आसीबो 4 minus 2 जे 2 and x1 value 1 okay so that's point is what 1 comma 2 okay so I check the 1 comma 2 रे कोन होची 1 comma 2 put करे कोन आसीबो 3 so what is the maximum value is 3 so the option C कोन होची correct कारण the maximum value is कोन 3 so चला देखिया maximum value of s1 plus x2 is 4 on the region union okay union ए पचला that means union कोन आसी जीवो that means ये आसी जीवो एतिकी ओके so ये एतिकी आसी गला that means union 3 1 आसी that means 3 1 कोन अछि 4 so 4 is कोन maximum ना 4 is so the answer is कोन 4 and also given be 4 is the maximum x1 plus 2 is 4 on the region of s1 union s2 so you know the answer how to solve of this question 25 get the other 25 question so this questions get 2025 रो question and ये question number 21 and question number 21 पचाला consider the function f of that r square to r given by f of x comma y and this one and then for the function f the inverse function theorem is applicable at all point पचारची not applicable at exactly 1 point पचारची not applicable exactly 2 point of r square not applicable exactly 3 point of r square आंक भितरु कोटा ट्रू हबो so आकु ट्रू करिया पे जाको भी कोठी 0 होदिबो ओके जाको भी मेथड तुम कोन छ ता डिटरमिनेंट करिवो ता डिटरमिनेंट कोन ये 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट हबो ता 2/2 डिटरमिनेंट को x y एलिमेंट पुट कले से डिटरमिनेंट कोन होतो 0 होतो और दैट्स पॉइंट कोन नॉट एप्लीकेबल हबो आ जदी कोनोसी पॉइंट जदी न होला तमे कहबो ऑप्शन ए माने एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट यस और नो तमे बुझी परतो ए क्वेश्चन को मते करिवार केमिति अछि सो चला हम यार जाकोबी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट भाग करिया चेक करिया दैट डिटरमिनेंट कोठी 0 होउची सो स्टार्ट सो f of x कमा देछि तमे कोन करियो f of x कमा दे फर्स्ट कोन भाग करियो f of x भाग कर दबो f of x कमा y लिख दोछि f of x कमा y कोन लिखि e s क्यूब minus 3s स्क्वायर minus 3 3xy square and minus 3x okay 3s square y cube 3s square y minus y cube minus 3y minus y cube minus 3y आउ एफ ऑफ एक्स कौन बाहर आम आम जो डिटरमिनेंट एफ ऑफ एक्स कौन बाहर एक्स डेरिवेटिव कर आपको डेरिवेटिव कले ये सॉरी 2 सेकंड सो आई फाट सॉरी सॉरी मुझे कौन ओके दिस वन देखिए एफ ऑफ एक्स कौन ओके मु फास्ट कौन कली दिस वन को एफ नहीं गली ओके एफ कौन नेली एस क्यू माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 3x ओके आउट एटा को नेली जी ओके 3s स्क्वायर y माइनस y क्यू माइनस 3y ओके मते अब कौन जाकोबी मैट्रिक्स फाइंड करे जाकोबी मैट्रिक्स कौन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई इरा डिटरमिनेंट आका डिटरमिनेंट करी आउ को पॉइंट एक्स एंड वाई पुट करी 0 तो दैट्स पॉइंट फॉर नॉट एप्लीकेबल यदि कोनोसी पॉइंट बाय सब पॉइंट पे नॉट इक्वल 0 डिटरमिनेंट तमे डायरेक्ट कहबो कोन एप्लीकेबल एट एवरी पॉइंट ओके सो एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव करो कोन 3s स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 ओके तो देन अब सेकंड एटा को सॉरी जी ऑफ एक्स को करो ये बाय 6xy ओके दिस 6xy तब सेकंड ये एफ ऑफ वाई को विथ रिस्पेक्ट वाई करो माइनस 6xy ये तो 0 ओके आपको बे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट वाई 3s स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 चलो आपको डिटरमिनेंट करिए डिटरमिनेंट कले कौन पाइबो 3s स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 रो होल स्क्वायर देन आफ्टर ये कौन प्लस 36xy ओके आपको तुम कौट देखियो 0 होची चलो सीटा चूज करिया आ तुम जडी x एंड y वैल्यू 0 हेले दैट्स ये पार्ट 0 हो आ एटी 0 पुट कर देले x 0 हो गेला सो सपोज y रो वैल्यू 1 नेले भी ये कौन हो नहीं ये हो नहीं सो ओके ये पार्ट भी 0 कर पड़ियो सपोज j इक्वल 0 3s स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हवा दरकार दैट मीन्स ये कौन x और y 0 आसो कारण ओके तो 36 स्क्वायर ओके आउ ये कौन पाइबा 3 कॉमन ने भी 2 सेकेंड x एंड और y 0 है सपोज y 0 नहीं ओके सपोज y 0 नहीं दैट मीन्स x s स्क्वायर x 1 कौन आसो प्लस माइनस 1 x 0 और y 0 ने x नो कौन
प्लस माइनस 1 यदि y 0 नेलु ए कोन इमेजिनरी सो दैट मीन्स एटी केतेटा पॉइंट आसीबो देखिबो 2 पॉइंट 1 0 एंड -1 0 सो व्हिच ऑप्शन ट्रू कारण तुम देखिबो -1 एंड 1 0 रे दैट पॉइंट ये कोन नॉट एप्लीकेबल सो कारण आमे सही पॉइंट रे आमे कोन पाइबो 0 पाइबो ए दीटा पॉइंट तुम 0 पाइबो आ डिटरमिनेंट देखिबो यस और नो एक्सपेक्ट 2 पॉइंट आ दीटा पॉइंट छाड़ देला जो पॉइंट से सब नॉट इक्वल टू जाको भी डिटरमिनेंट आसीबो दैट मीन्स एटी कोन इनवर्स फंक्शन एप्लीकेबल हो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नॉट एप्लीकेबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर सो तुम मैंने बुझी पारथबो गेट 2025 क्वेश्चन 20 नंबर आंसर कोन ऑप्शन सी थैंक यू टू एवरीवन एंड जदि आपण माने पर्यंत पहुंच जाइछ दैट मीन्स ये वीडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो सो ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू प्रिपेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जाम कारण से मानकु बहुत हेल्प हे पारिबो आ तुम मानकु यदि किछ क्वेश्चन अछि यू आस्क इन कमेंट बॉक्स आई विल डेफिनेटली आंसर यू सो अगेन थैंक यू जय जगन्नाथ सी यू नेक्स्ट वीडियो